नमस्कार। जैसे धौल साहब ने बोला कि अभी सब लोगों को सोना नहीं चाहिए, थोड़ा तो जागे रहना चाहिए, तभी ये हाइड्रो समझ में आएगा। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रो वी शुड हैव सम होलिस्टिक अप्रोच। व्हाट वी डू जनरली, जब भी हम हाइड्रो की बात करते हैं तो एक हाइड्रो डेवलपमेंट के अलावा उसके इधर उधर दाएं बाएं जरा झांक के कमी देखते हैं। वी फील दैट इट इज़ ओनली एंड ओनली हाइड्रो पावर जनरेशन. It is only and only hydrothermal mix what we are talking. It is only and only that perhaps for the maintaining the particular frequency band we need hydro. What the point is that until unless we discuss holistically, until unless our education is not imparted to the masses, perhaps future of the hydro is not bright. Future of the hydro will remain dark as it is today. To understand the necessity of hydro, अब ये कहते हैं साहब हाइड्रो बनेगा तो ये नुकसान वो नुकसान होगा. I say simple question. You close Bhakra Vyas projects for 2 days. Perhaps you have not to educate anybody in India, whether he is technocrat or he is bureaucrat or he is advocate or doctor. 2 दिन के लिए आप बंद कर दिए, सिर्फ 2 दिन के लिए. यू विल कम टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो. भाखड़ा व्यास itself, we are catering the needs of 55,000 square kilometer irrigation area, which is about 8% of irrigable area of India, catering the water needs of about 30 million people as per our rough estimate. And economic advantage of this water itself by way of food production and milk production or agro production is, as per our rough estimate, I am not authenticating the things, is of the order of about $20 billion at 212 price level. $21 billion means more than 1.2% of GDP. Not even a single company, including Reliance, is contributing this much in entire India. And when we talk about hydro, we should not forget about the water. Why water? In India, we are having only 4% of fresh water of the world to catering the needs of 18% population. 4% water, 18% population. Water storage is only 90 days, whereas in the developed countries, it is about 2 years of water storage. The water availability since independence has gone down from 5,600 cubic meter per capita to 1,200 cubic meter per capita. The water wastage in India is 70% against the 30% in the developed countries. And in case we think holistically, we should propagate that it is not only energy security, it is for food security, it is for water security. So 3 securities it is providing: food, energy and water. And no other type of energy in the world is having this much advantage what hydro is having. But our constant is that it is costly, gestation period is more. How to make it viable? Yes, viability aspect has to be addressed by the policy makers. They should deliberate. Perhaps many things have been deliberated already. Why no feed-in tariff for the hydro? No RPO or REC type mechanism, though Mr. Harry Hall has brought out new concept HPO, perhaps it is under discussion at ministry level. And we should have the way certain percentage of RPOs or RECs in renewable, we should also think that for hydro also there should be certain percentage which should be fixed. Long back, about in 2001, I visited USA in California.
So strong debate was going on that सर यहाँ पे पहले 10% हमें बिजली रिन्यूएबल की लेनी पड़ती थी. नाउ गवर्नमेंट इज फोर्सिंग दैट 20% renewable energy has to be purchased at whatever cost developer are supplying. But you are bound to purchase 20% electricity from the renewables, including hydro. Peaking tariff should also be there for hydro. Once we are stabilizing the frequency, then why not peaking power tariff? In majority of the countries, developed countries, peaking power tariff is there. But in India, we feel that socialistic पैटर्न होना चाहिए साहब, इसलिए इसमें ये भी नहीं होना चाहिए, सब्सिडी भी दे दो, सब कुछ कर दो. बट इन लॉन्ग रन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हार्डली फ्यू पर्सन्स आर थिंकिंग. नो ग्रांट इन एड फॉर द अप्रोच रोड. प्रोजेक्ट तो बना दिए साहब JNK में, बिल्कुल लेह लद्दाख के उधर आसपास. इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन की आपकी जिम्मेदारी सब कुछ है. बट आस्क योर सेल्फ, can developer spend millions and millions of rupees just to make approach road? Why no aid or grant for such type of projects? In the name of environment submergence we claim कि सब हाइड्रो अगर बना दिया तो इतना ज़्यादा सबमर्जेंस हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा. मतलब प्रोजेक्शन इज as if everything is ruined in case hydro is developed in the area. As per the rough estimate of Bhakra Vyas, we submerged, not only submerged, we actually acquired almost 400 square kilometer of land for all the projects, 2900 megawatt, 6 projects. And you will be surprised to know that area reclaimed is 800 square kilometer. So double of the area we have reclaimed what we submerged. And benefits are no flood since construction of the projects, no famine, no drought. जब तक आप सब इन सब चीज़ों को बताएंगे नहीं मासेस को कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं अगर उनको निकाल दिया जाए, वेयर आर यू स्टैंडिंग? नॉट ओनली इंक्लूडिंग फूड के लिए आपको विदेशों में जाने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि हमें फूड दे दीजिए, आपके लिए दाना नहीं होगा. ये पोजीशन है जो स्टोरेज डैम आज तक इंडिया के बने हैं. और आज हम सबसे ज़्यादा एंटी हैं स्टोरेज डैम्स के, बिकॉज वी आर नॉट एजुकेटिंग द पर्सन्स हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. इन द नेम ऑफ जियोलॉजी वी से कि जियोलॉजिकल सरप्राइज हो गया साहब. आई आस्क यू, अगर जियोलॉजिकल सरप्राइज हो गया तो हमारे कंट्री के दूसरी तरफ जो बैठा हुआ चाइना है उसके लिए क्यों जियोलॉजिकल सरप्राइज नहीं होता? मतलब भगवान ने सारी जियोलॉजी की सरप्राइजेज हमें दे दी हैं उठा के, उनको कुछ नहीं दी. कह दिया कि भाई आप तो बनाए जाओ, लेकिन भारत में बनेगा तो जियोलॉजी की सरप्राइज हो जाएगी. सर सिंपल थिंग इज जियोलॉजिकल सरप्राइजेज विल बी देयर, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, दैट्स वाई जियोलॉजिस्ट आर देयर. अगर इनकी प्रॉब्लम ही नहीं है तो जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही क्या हमें? फिर तो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, वो काम कर ही लेंगे. दे आर मेंट, देयर एग्जिस्टेंस इज ओनली बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर देयर. In the name of environment, yes, we should weigh that to what extent we have to compromise. This term social cost benefit analysis, we carry out that social cost benefit, that what is the cost of this social cost and what are the social benefits. In case that is beneficial, you educate the persons living in the area or the persons who are opposing कि ये सब बनना नहीं चाहिए. Why education? Education is playing a much bigger role than anything else when we talk about hydro development. बाकी किसी पावर में आप कितनी भी कर लीजिए, आपका कोई ज़्यादा सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं है.
But here, education plays major role. One single example can clarify why education. सर You recall, sir, मेरा माफ़ कीजिएगा, हम अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, कमर्शियल ब्रेक आने वाली है, तो ज़रा जल्दी ख़त्म कर लें ज़रा। नहीं, मैं जल्दी खत्म, लेकिन आपके लिए काम की चीज़ ही बता के जाता हूं। सारी काम की चीज़ें सर हम तो सुनते, इतना मज़ा आ रहा सुन के, दुख हो रहा Why है आपको। education? You recall that जब महाभारत में अर्जुन को लड़ाई के लिए बोला गया तो उसने कहा मैं नहीं लड़ता. Now he was the one of the wisest person of that time. So wisest person of the time, उसको भी educate करने के लिए कृष्णा को पूरी गीता पढ़नी पड़ी. So if we say that rules is there, laws are there, then people should understand that is not there. From area to area, it vary widely. We have to educate the person by studying that particular area. We should not forget that in case we don't develop hydro, what is going to happen? China is developing 3 projects, Dago, Jiasha, Jiangshu. They are trying to divert 200 billion cubic meter of water out of the 600 billion cubic meter water of the Brahmaputra basin. They are trying to build 37,500 megawatt project, single project on Yarlang Sangpu, 15 times bigger than Nathpa Jhakri. Trying to increase the capacity of hydro from 2.8 lakh megawatt to 4.2 lakh megawatt. 40,000 मेगावाट जो हमारी आज तक की कैपेसिटी है, अगले 3 साल में हर साल वो कोशिश कर रहा है कि हम 3 बना देंगे. फ्रीक्वेंसी का टच कर ही लिया हमने. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात होती है हमें, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमें देखना पड़ता है दैट इन द नेम ऑफ कि ये टाइम से बन जाएगा, हमने फटाफट थर्मल ले लिया. यस, थर्मल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, देयर इज नो डाउट, बट from where thermal will get water in case we don't have adequate number of storage dams. अकेले भाखड़ा ब्यास से 4-5 थर्मल पावर स्टेशनों को पानी जाता है, अगर उनसे पानी बंद हो जाए वो थर्मल भी बंद हो जाएगा. So such type of things should be addressed when we develop for hydro. Sir, more on question answer session. So rest of the things, because resources are not ours, resources are of the future generation. So friends, for God's sake, think on these lines, that how to educate ourselves, how to educate the masses, so that less resistance is there in the area. For your information, I remained at Swansea. When I was posted, Swansea was a closed project. I was not told that it was closed. So I was posted at the time when it was closed. So within 7 days, it was brought on the line. Within 3 months, tunnel progress accelerated from 90 meter per month to 187 meter per month. And when I left, the average progress of my time was 1.5 times in comparison to all the previous best year. And it remained uninterrupted because of the education, nothing else. Thank you very much. Thank you very much, sir.